Hi guys, welcome to UPSC Cloud. Today we will study the short in short about Mahatma Gandhi's Andolan and Satyagraha. So let's start. Mahatma Gandhi, born on 2 October, everybody know 2 October 1869 and died on 30 January 1948. Okay, and everybody know that his father name is Karamchand Gandhi and mother name Putli Bai, wife Kasturba Gandhi, children Hiralal, Manilal, Ramdas, Devdas. So when he grew up, he went to England to study law, and after completing law, he went in 1893 in South Africa. He went there to represent Indian merchant in lawsuit, okay, and lived there for 21 years. He spent there 21 years, and in 21 years in South Africa, he formed Phoenix Settlement and Tolstoy Farm. Okay, his first moment of his life, or we can say it Andolan, that is Phoenix Settlement. He met there Gopal Krishna Gokhale and treated him as his guru. Gopal Krishna Gokhale guided Mahatma Gandhi and asked him to read Ruskin and Leo Tolstoy. Now here comes Gandhiji as treating Gopal Krishna Gokhale as his guru. He comes through many talks, or we can say that debates with him, that in order to free India from colonization or colony, what we should do. All these points, Gopal Krishna Gokhale guided Mahatma Gandhi that before doing such protest, you should read these two books, Nobel, or we can say that these two thinkers' books before protesting or starting any movements. So Mahatma Gandhi read Ruskin, and from this book he learned hunger strike. Okay, hunger strike, and from Leo Tolstoy, that is, he learned non-violence protest. Okay, from it, you know that Gopal Krishna Gokhale told Mahatma Gandhi that when you build such great patent beside you or behind you, then when you went on hunger strike, this can second anybody, any big government, on any authority. Okay, so in 1915 Mahatma Gandhi came to India. Okay, and Gopal Krishna Gokhale told him that after you will go in India, you have to wait for 2 years as a student. So Mahatma Gandhi waited 2 years, and in 1916 he founded Sabarmati Ashram in Ahmedabad, which was founded by Ambalal Sarabhai, and also participated in Lucknow Pact, that is Lucknow Adhiveshan. ठीक है, उसके बाद now next in 1917, now his movements starts. He started with Champaran Satyagraha. Champaran Satyagraha, it is in Champaran district of Bihar, and abolishes Tin Katia system. What is Tin Katia system? If any farmer having 20 parts of his land, then on 3 part, or we can say 3 katta, if any farmer has 20 katta of land, and on 3 katta of this 20 katta land he has to cultivate इंडिगो, जिसको हिंदी में नील की खेती बोलते हैं. इंडिगो कल्टीवेशन, नील की खेती. ठीक है, नाउ on indigo cultivation, indigo is a that type of plants on which field it was planted. It barren the field
दैट इज बंजर, वो उस खेत की भाग को बंजर बना देता है जहाँ पर नील की खेती की जाती है। तो हर साल 3 कट्ठा किसानों की ज़मीन बर्बाद होती थी। नाउ आफ्टर इंडिगो कल्टीवेशन ही एबलाइसेस 3 कट्ठिया सिस्टम। देन इन 1918 he started Kheda Satyagraha, and after Kheda Satyagraha in 1980 he mill workers and owners, and in 1919 Rowlatt Act. Rowlatt Act allowed certain political cases to be tried without juries and permitted interment of suspect without trial. इसका मतलब ये है कि कोई भी पॉलिटिकल केस जो है, कोई भी पॉलिटिकल व्यक्ति, और वी कैन से कोई भी व्यक्ति को आतंकवादी या फिर वी कैन से दैट क्रिमिनल घोषित करने के पीछे इनके लिए कोई दलील, कोई वकील, कोई दलील कुछ भी नहीं है। ऐसे ही किसी को भी अरेस्ट करने की आज़ादी थी इस एक्ट के अनुसार, रॉलेट एक्ट के अनुसार ये आज़ादी थी, जिसको गांधी जी ने ब्लैक लॉ, विच इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक लॉ, ओके, on protest of this act, जालियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। ठीक है, और जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ और इस प्रोटेस्ट 79 लोगों की हत्या कर दी गई उस प्रोटेस्ट में, जो कि आप लोग सब जानते हैं जनरल डायर वाला कांड। टू इन्वेस्टिगेट दिस, इस हत्याकांड को इन्वेस्टिगेट करने के लिए हंटर कमिटी वाज फाउंड, जो कि हंटर कमिटी का गठन किया गया। एंड महात्मा गांधी रिटर्न हिज केसरे हिंद रिवार्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। महात्मा गांधी को जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने केसरे हिंद की उपाधि दी थी उसको इन्होंने लौटा दिया। ठीक, और वहीं 1920 में ही स्टार्टेड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं असहयोग आंदोलन। इन विच एवरीबडी, वी कैन से दैट everybody is asked to not to cooperate any Britishers, like washing their clothes, what we can say that washing their clothes, or we can servicing anything, and any type of service they boycott this। मतलब मीन्स दैट गवर्नमेंट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में ये होता था कि दैट इज कि ब्रिटिशर्स को कोई सहयोग न दे, ना कि मतलब हर फील्ड में, किसी भी फील्ड में उनको कोई सहयोग न दिया जाए। इसका उद्देश्य यही था, जो कि इसका कोई आउटकम नहीं निकला, बिकॉज ब्रिटिशर केम्स इन इंडिया नॉट टू गेट हेल्प्ड और नॉट टू गेट सर्व्ड, बट दे केम टू इंडिया टू जस्ट डिग आउट द प्रीशियस रिसोर्सेस ऑफ इंडिया। इंडिया की महत्वपूर्ण या फिर बोल सकते हैं कि कीमती रिसोर्स जैसे कोल, आयरन, रॉ मटेरियल्स, मीन्स इन सबको निकालने के लिए वो लोग यहाँ पर आए थे, ना कि उनको भारतीयों से सेवा लेना था। तो इस मूवमेंट का कोई असर नहीं पड़ा, नॉन कोऑपरेशन आंदोलन का, जो असहयोग आंदोलन का, उन पर कोई असर नहीं पड़ा। ठीक है, उसके बाद 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा घटना हुआ। चौरी चौरा घटना ये था कि बढ़ते दामों के प्रोटेस्ट में, या फिर सामानों के बढ़ते दामों के प्रोटेस्ट में, या फिर शराब वगैरह के लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे थे लोगों पर, अचानक से पुलिस वालों ने हमला किया। लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे थे चौरी चौरा में इतने उग्र हो गए, दे गॉट वेरी एग्रेसिव एंड दे स्टार्टेड in that protest. British police which went there to stop the protest and started firing. The people get aggressive and they just treated British police badly, and they making them to, what we can say that, okay, leave,
चौरी चौरा, that is not much important, we will study in details. अरे इतना इसमें इतना समझ लें आप लोग कि उसमें उन्होंने पुलिस वालों को ही दौड़ा दिया और पुलिस वाले खुद आकर के दे लॉक्ड themselves in lockup from inside and the protesters locked the jail from outside and they started throwing kerosene in that jail ward, and they burned 22 peoples, and in that 22 peoples police personnel, we can say that police personnel were burnt. 1922 में 22 peoples were burnt, and in that point of time 12 फरवरी 1922 महात्मा गांधी withdraw his non-cooperation movement, and 10 March 1922 they put him into the prison. महात्मा गांधी को उन्होंने जेल में डाल दिया, और in 1924 he took part in कांग्रेस अधिवेशन में पार्ट किया, and you can see that in 1924 to 1930 he served people in pandemic, that is plague. आज के दिन में लोग, अभी हमारे यहाँ पे चल रहा है कोविड पेंडेमिक, जिसको लोग इतने मतलब कि इतनी उससे मतलब प्लेग से कम खतरनाक ये कोविड-19 है। इसमें लोग अपने करीबी को विच दे आर नॉट ट्रीटिंग द रिलेटिव्स इन ए गुड वे, महात्मा गांधी treated everybody and served many peoples. By that serving he made build up the great followers behind him. In 1930 he started civil disobedience movement. In that now सविनय अवज्ञा आंदोलन जिसको बोलते हैं, उसके पहले उन्होंने डांडी मार्च स्टार्ट किया था। ठीक है, डांडी मार्च उन्होंने 12 मार्च को 1930 में ही स्टार्टेड विथ जस्ट 78 पीपुल्स and reached with 20,000 of peoples in the west coast of we can say that Gujarat, where salt, and he abolishes, and he reached there on 6 April 1930 and abolish salt law. What is salt law? Because every Indian has to pay taxes to British in order to have salt. So he abolished salt law and made his own salt and abolished the salt law. And after seeing that 20,000 people behind him, he started next movement, that is 6 April 1930 civil disobedience movement, सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसमें उस समय के वायसराय लॉर्ड इरविन एंड वहाँ इंग्लैंड लंदन में जो बैठे थे पीएम रामसे मैकडोनाल्ड, ठीक है, गांधी जी आस्क्ड हिम दैट वी आर हैविंग 12 डिमांड्स दैट यू हैव टू फॉलो, एंड सो if you not follow, then we will do great level protest or movements. So, and at that point of time in London, Ramsay MacDonald started a first roundtable conference there and invited Mahatma Gandhi. And here Lord Irwin Viceroy asked Mahatma Gandhi that you have been called by Ramsay MacDonald in England, you have to go there. Mahatma Gandhi just boycotted that this is civil disobedience, that I will not go, with it humble. So in 1933 Gandhi ji not took part in civil. Okay, and there many people have came to see Mahatma Gandhi, and Mahatma Gandhi did not reach there. So great insult of Ramsay MacDonald. And in second round conference table, Ramsay MacDonald asked Lord Irwin that anyhow you have to make Mahatma Gandhi to reach here. So Mahatma Gandhi has its demand fulfilled before going to second round table conference, and Lord Irwin had agreed to fulfill that, and Mahatma Gandhi took part. And in 1932 his third round table conference occurred. Now in 1932 B.R. Ambedkar
asking another state for Dalit. But Mahatma Gandhi was not in a state to divide India, that is अखंड भारत. वे भारत की पार्टीजन नहीं चाहते थे. इसके लिए उन्होंने वो हंगर स्ट्राइक पर चले गए. ही वेंट ऑन हंगर स्ट्राइक. सो इन ऑर्डर टू डील विथ these two, 24 सितंबर 1932 पूना पैक्ट, दैट इज पूना समझौता है, और वी कैन से पूना पैक्ट होगा था, जिसमें रिजल्टेड इन रिजर्वेशन ऑफ दलित्स. महात्मा गांधी टोल्ड अंबेडकर दैट प्लीज डू नॉट मेक अनदर स्टेट फॉर दलित, जस्ट प्रोवाइड देम विथ रिजर्वेशन. सो दिस रिजल्टेड इन रिजर्वेशन ऑफ दलित. इन 13 अक्टूबर 1932 हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई. ठीक. 1940 इंडिविजुअल सत्याग्रह और दिल्ली चलो सत्याग्रह, दैट इज व्यक्तिगत सत्याग्रह की स्थापना, जिसमें पहले थे जवाहरलाल नेहरू और दूसरे विनोबा भावे. इन 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट, दैट इज अंग्रेजी भारत छोड़ो की स्टार्टेड. एंड एट दैट टाइम द एरा ऑफ वर्ल्ड वार II वेयर going on, in which Japan bombed on America, Hitler exploited England, Germany, France, and in India, Quiet India movement were break down the Britishers in India. So we can say that the World War and was the great or major role player in Indian independence. And here came cabinet mission to which Mahatma Gandhi ignored, and at last Britishers were ready to bring India's Independence Act. That is, so we can say that as Mahatma Gandhi is important in India's independence, and also we can say that World War II also played a very major role in India's independence, because at the time of World War everywhere there is a, what we can say, there is a disturbance of not established or stability in political systems in everywhere in the world. So at that time India's Quiet India movement, Quit India movement plays a major role in breaking down the Britishers. So there comes the Indian Independence Act, and after that so on many things happens. And in 1948, 30 January 1948, he was killed or assassinated by Nathuram Godse. That's how the Mahatma Gandhi's life went, and he was the world best thinker, we can say political thinker, we can say, or we can say Mahatma Gandhi has played a prominent role in Indian independence. So thank you.